Hello everyone, welcome to another Fan to Play Fantasy match preview. This is for the MI versus Paarl game that's going to be happening in just some time from now. And we have Nikhil Bhai with us today to give you his insights on what he feels about the game and also to take all of your questions. So, how are you doing, Nikhil Bhai, and how do you see this one going? Yeah, just about fine for now. Good evening. Hello, everybody. Thank you so much for joining. Thank you so much for always following the content that we share. Good to see you back, your visualization as well. तो प्लीज़ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फैंटेसी में आप जो सोच रहे हो उसको बैक करो क्योंकि वो आपकी सोच है इसके लिए फैंटेसी में हम खेलते हैं क्योंकि अपनी सोच सब यूज़ कर पाए सो यस हेल्थ इज स्लाइटली ऑन द साइड ऑफ द विकेट दैट वी सी इन साउथ अफ्रीका T20 थोड़े इधर उधर है बट होपफुली सब इसके लिए मैं ब्रेक लेते जा रहा हूँ तो लेट्स सी हाउ इट गोस Yes, we'll take care of Nikhilbhai. Don't worry. No, too much of stress being put. We are taking it easy with the previews. या And as far as this game is concerned, it's going to be played at Paarl again, where we've seen that middle over batting is the most difficult phase. But first up, let's look at what we can expect in terms of the conditions. So from whatever we have seen at Par, like I was mentioning, middle over conditions, middle over is a little bit more tough time to bat at, especially because the pitch is slightly slower in nature. So it's the kind of place where you want to cash in, especially in the power plays. Nikhil bhai, how do you see it going? Again, a similar kind of trajectory, and do you see the team winning the toss, also wanting to bat first? पॉसिबल है और ऑल्सो टू द पॉइंट ऑफ पावर प्ले बैटिंग अगर आप देखें राइट थ्रू द टूर्नामेंट काफ़ी कम टीम्स हैं हु हैव हैड अ वेरी गुड पावर प्ले और अगर रहा है तो देव हैड सम स्लाइस ऑफ लक इन दैट सेंस एज वेल जो जितना भी अच्छा गया है सो Hmm. वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ टीम्स प्लान अराउंड दैट क्योंकि जितने भी हमने गेम्स देखे कल वाला भी अगर आप गेम देख लो तो 80 ऑल आउट टेल्स यू अ लॉट ऑफ द डैमेज इज डन राइट अप टॉप अब Hmm. जेएफके की टीम तो इतनी अच्छी है कि 70 से 2 पे भी फिर दे एंडेड अप विद 100 स्कोर तो वो टैलेंट तो सब में नहीं होता पर द डिफिकल्ट फेज हैज बीन टू स्टार्ट और अब जैसे वेन्यूज रहे हैं देयर हैज बीन हेल्प फॉर एवरीवन और ये आफ्टरनून गेम है तो यू एक्सपेक्ट कंडीशंस टू बी सेम तो ऐसा मुझे नहीं लगता जैसे इवनिंग गेम्स के लिए हम कहते हैं कि द बैटिंग शुड गेट बेटर अंडर लाइट्स डिस्पाइट Hmm. सम मोमेंट अर्ली यहाँ पे मुझे लगता है दोनों में वो इवन रहेगा सो आई थिंक काफ़ी कैट एंड माउस वाला गेम रहेगा बिटवीन द साइड्स क्योंकि अब सबको सबकी वीकनेस पता है तो Hmm. इन दैट सेंस इट मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू फॉलो Yes, super interesting game to follow. And guys, this is not recorded. We are doing this live. And Vimal sir, this is not recorded. And yes, all of his picks have gone fire. Sundar came and bowled those crazy balls at the end also. And don't see his team right now because we are hopefully on the edge of something more special. All your questions, guys, we'll take them at the end. And Yeah. first up, let's just discuss the base team. Who are the few guys who we feel will be essential for us to take in both scenarios, and then we can look at the rest. So now let's look at the base team for this game, and I'll just share my screen. Just give me a minute. बिल्कुल बिल्कुल So first up in the keeping section here, we have gone with Joss Butler. Now, like we said, power plays will be important, and Joss should be the key for you. The reason for not taking Rickleton is because he has been slightly up and down and iffy with his form, and Ngidi will try to cash in on that and bowl a few good balls to him up top. And as far as Rolofsson is concerned, the challenge is only going to get tougher because he's going to be up against Fortune and Shamsi. So hence we have not opted for the second keeper. Nikhil, by any scenario where you'll opt for a second keeper, or you're just going to stick to one because both of them will have their set of problems in this game. बिल्कुल देखो बटलर की थोड़ी हिस्ट्री भी है विद एमआई तो Hmm. वहाँ पे मैं ज़्यादा इलेबरेट नहीं करूँगा एवरीबॉडी नोज कि क्या है तो दैट सेड आई थिंक पिछले गेम में आई फेल्ट ही वाज प्लेइंग टू मेनी शॉट्स टू अर्ली जो मुझे नहीं लगता यूजुअली हम बटलर के साथ देखते हैं और उसी में वो Hmm. आउट हो गए नहीं तो यूजुअली बटलर इज समबडी जो अपना टाइम लेते हैं और एक बॉलर को पकड़ के उसके पीछे ही गोस आफ्टर दैट काइंड ऑफ बॉलिंग तो यहाँ पे अब आप एमआई को खेल रहे हो तो सब वैसे ही बोल रहे तो आप किसको टारगेट करोगे वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है बट आई स्टिल बटलर एक डेफिनेट पिक होंगे बिटवीन रोलफसन एंड रिकल्टन देखिए रिकल्टन इट्स द सेम स्टोरी विद मैट गीक सैमार पर Hmm. आप सोचोगे कि नहीं चलेंगे तो चलते हैं आपको बोलोगे चलेगा तो नहीं चलता है
बट द थिंग विद रिकल्टन आई फील मोर इज वो थोड़ा जल्दी चांस लेते हैं एज अपोज टू रूल ऑफ सन एट टाइम्स. और रूल ऑफ सन का मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो फॉर्म में आते हैं तो वो वहाँ पे रहते हैं. सो आई थिंक यू कैन टेक ईदर Plus ऑफ he'll देम. keep. Hmm. यस, तो वो आपको एडवांटेज मिल जाता है कीपिंग पॉइंट से. तो इन दोनों में से जिसको भी आप चाहिए आप ले सकते हो. आई प्रॉब्ली टेक वन मे बी इन मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, क्योंकि मैं तो मिनी जेल ही मोस्टली खेलता हूँ. स्मॉल लीग खेलने से डर लगता है कभी कभी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ गेम्स वी सी. तो यस, फॉर नाउ आई थिंक वन कीपर इज गुड इनफ. एंड रेस्ट, क्योंकि हम बोलर्स ऑलराउंडर ज़्यादा भरेंगे तो वी नीड स्पेस फॉर दैट. Yes, we'll need a lot of space for that. In the batting, we have gone with Devil Brewers and David Miller. We've seen that Devil has had problems against extra bounce and pace, but we feel that because it's going to be only one threat in Ngidi and this track is not known for its pace and bounce, he should be able to stick in here. And David Miller, obviously, because of his form and the kind of bowlers that are going to be in the opposition, it'll be important for the Royals for their experienced pros to come off. So hence, we have backed Miller and Butler, while in the all-rounders we have gone Odion, George Linda, and Sam Curran. Now, with Odion is slightly tricky because of the way they are using him, the kind of phases he's coming in and bowling. So if you feel like MI is going to win this game, then in that scenario he has to Yeah. be in your team because he's hitting the ball big and he's bowling in phases that are known for wicket taking. But if you feel like Royals is going to come up trumps, then maybe that reduces Odion's role because he's generally being introduced as the last bowler. So if you feel like there's an easy chase coming, or Yeah. if there's that scenario where he'll be hit at the death, then you can leave him out in that space. बिल्कुल. तो देखिए, आप यहाँ पे दो सिंपल सिनेरियो है. अभी जो टीम हमने बनाई है फॉर सैंपल और एज ऑफ नाउ द बेस इट्स डेफिनेटली सेज दैट मुंबई आर द एमआई आर द स्ट्रॉन्गर साइड. तो वैसे Hmm. पिक्स किए गए. पर अगर मुंबई आर बैटिंग फर्स्ट तो देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर साइड, क्योंकि देन आपको यू कैन टेक समझ लगे जोन्स एज वेल. यू कैन ड्रॉप ऑडियंस स्मिथ एज वेल अगर आपको लगता है कि सेकेंड इनिंग्स में उतना रोल उनका वैसा नहीं होगा. या तो अगर आपको लगता है कि नहीं, लिंडे का रोल वैसा नहीं होगा, सामने मिलर हैं, he'll बी एबल टू प्ले हिम ऑफ वेल ऑन बटलर, उनके सामने रिस्क लेंगे नहीं. तो दैट इज हाउ यू हैव टू विजुअलाइज एंड टेक अ कॉल देयर, क्योंकि देखो सैम करन भी वैसे यूज नहीं हो रहा है और उनका फॉर्म भी वैसा नहीं रहा. सो टेक्निकली आप तीनों को रिप्लेस कर सकते हो विद लुबे, इवन जोन्स एंड वन ऑफ मे बी वन ऑप्शन फ्रॉम केप टाउन. तो वैसे आप चेंजेस कर सकते हो. रिमेंबर टू बैक योर विजुअलाइजेशन, क्योंकि कंडीशंस इस टूर्नामेंट में ऐसे रहे कि जब हम सोचते हैं कि विकेट्स जाएंगे स्पिन को तो पेसर विकेट लेके जाते हैं और 200 बनते हैं. और जब हम सोचते हैं कि नहीं पेस विकेट लेगा या नहीं लेगा, तो इट्स द अदर वे अराउंड दैट इज हैपनिंग. 80 ऑल आउट 70 ऑल आउट काइंड ऑफ गेम्स हो रही है. तो प्लीज बी वेरी श्योर ऑफ योर विजुअलाइजेशन एंड देन यू कैन गो इट. Yes, absolutely. And in the bowling, we have gone with one Royals bowler in Ngidi and in Yeah. two with two Royals bowlers rather, Ngidi and Shamsi. While we have opted for the three Cape Town guys in Rabada, Archer, and Rashid Khan, we have left out Fortin here because we feel like he will be used more in a defensive role. And if you feel like Rickleton will score a few runs up top, then that makes it difficult for Fortin because there will be a few more left-handers that he'll tackle, especially if the times when Linda is getting promoted. But I Yeah. guess the key thing for you to decide here is if you feel Linda will score runs, then it becomes difficult for you to take 14. But if you feel like Linda will not score runs, his role with the ball might be minimized today because of Miller, Morgan, the guys in the middle order who are lefties. So for you, the key question to answer is if Linda scores runs is your Hmm. visualization, then 14 can go out. But if you feel like he's not going to score runs and Linda's bowling role is minimized anyway, then 14 is the guy for you to go with. बिल्कुल. तो जो जैसे मैं कमेंट्स में भी देख पा रहा हूँ, द लाइन ऑफ थिंकिंग इज प्रेटी सेम. हम भी मैचअप को सोच के ही टीम बना रहे हैं. बट Hmm. याद रखना, ये लीग में उल्टा भी हो रहा है, ये साल में उल्टा भी हो रहा है. रूलफ मैंडमोवे ने 2 लेफ्टीज को निकाला था, जॉर्ज लिंडी ने भी ऐसा आउट कराया, फॉर्च्यून आल्सो टुक 2 लेफ्ट हैंडर. Hmm. तो वो हो रहा है. तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू रीड द कंडीशंस. और वैसे फिर आप मे बी रिस्क ले सकते हो कैप्टन ना वाइस कैप्टन ना करके उनको. एंड देन यू कैन टेक रिस्क ऑन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी टू गाइज लाइक आर्चर, रबाडा, लुंगी, बटलर, बिकॉज यू नो उनकी एटलीस्ट बैटिंग बॉलिंग तो आ जानी चाहिए. कितनी Hmm. वो तो ऑफकोर्स फॉर्म और कैसा सिचुएशन जाता है उस पर. सो दैट इज हाउ यू कैन टेक. अभी के लिए यू विल फील दिस टीम इज नॉट स्लाइटली probably more favored towards Cape Town because we feel they should do better. But Hmm. अगर आपको लगता है कि there are enough options that जैसे हमने mention कर, so you can try all of them in whichever ways that you want to.
and form a decent base team like that. Yes, absolutely. Now let's look at the Grand League picks for this one, and then we'll get to all your questions. So Grand League picks for this game, and as I can see in the comments, many of you have already stolen Yeah. my Grand League picks. My two picks for this game are Shamsi and Rashid Khan, and this is purely because of what we spoke about in the venue conditions, in the way we expect the phases of the game to go, and the kind of matchups that we have in the Hmm. opposition. Both of them should play the best roles. So both of them, and whoever's bowling second will be vice captain of my team. बिल्कुल, अगर देखो सभी एक्सपर्ट सभी सब जगह पे एक्सपर्ट हो गए हैं, ग्रैंड लीग ऑप्शन सबके काफ़ी सेम है। तो मैं भी शम्सी सर के साथ बिल्कुल जाऊँगा, पिछले गेम में भी गया था, इस गेम में भी जाऊँगा। इस गेम में आई फील ब्रेविस कैन पोटेंशियली डू वेल, अगर वो शुरू में जो लुंगी का स्पेल है वो निकाल लेते हैं, तो ही Hmm. शुड बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर। पर अगेन वंस वी हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द पिच रिपोर्ट, अगर मिलती है तो ढंग से, तो मे बी वी कैन टेक अ कॉल, मे बी इन चेज शायद आप उससे ले सकते हो कि टारगेट पता हो तो ही विल बी एबल टू पेस हिज नॉक बेटर। तो ब्रेविस एक वैसा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। और अगर एक नाम चाहिए जो बड़ा नाम है जो अच्छा करना चाहिए, तो आई थिंक मिलर शुड बी द गाय हु डज वेल। तो जो दो बैटर हमने लिए थे बेस टीम में, मिलर एंड डेविल ब्रेविस, रिस्की है, देखो काफ़ी टीम कॉमन ही रहेगी मोस्टली सबकी, गेम कैप्टन वाइस कैप्टन का ही होगा। तो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व। Yes, absolutely. And we can see that many of the comments match our visualization and thought या process too. So good to see that people are taking cues from the way the thinking should go. And now we are open to questions if you have any. And the first one is now good number of lefties, so better to skip Linda. So we already answered that one while discussing the base team, that it depends totally on the run scoring potential that you feel Linda possesses today, because that will be the key to your answer, because with the ball we can never say how much he'll be used, especially with the number of left-handers. So yes. बिल्कुल, और जैसे मैं भी फॉलो कर ही रहा हूँ, 48 for 7 है। सिडनी और स्टीव ओकिफ ने ले लिए विकेट्स काफ़ी सारे, वार्नर को भी आउट किया। तो यस, मैचअप्स वर्क इफ यू यूज गुड बॉलर्स एट द राइट टाइम। 48 for 7, wow. So guys, we'll just wait for a few minutes for the toss to happen, and Archer will play or not, we are not sure, but we also heard at the start of the tournament he'll play just 2 games, but then he's या already played 3, so we're assuming that they'll want to use him today if he's available, so hence we have picked him बिल्कुल। with that thought. Thoughts on Evan Jones? So Evan Jones has got what we term as the junk wickets at points, where हम्म, he's coming in when there is an opportunity for a wicket to fall. Not sure या if that will happen every time, so it totally depends on that. Because as far as batting value is concerned, he's not shown it yet, even though we know he's a very big hitter. But in this game, if the conditions are slow, like we're talking about, and with Rashid in front of him, it's not going to be easy, at least with the bat. So if you feel like the value is coming with the ball, then fair enough. बिल्कुल, बिल्कुल। I don't know which app is left now, which is three, but yes, you can. There are good enough. There are few third batting options, because we या have taken Miller and Brewers. You can try Rassi. You can try Jason Roy. One of these two probably. Owen Morgan batted well in the last one, and Owen Morgan versus Rashid is always interesting to watch. बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू टेक द थर्ड बैटर इज जो ऑप्शंस है, जेसन रॉय, रासिम एंडरसन, देव ऑल प्लेड, मॉर्गन भी, देव ऑल प्लेड शॉट्स इन दिस टूर्नामेंट जहाँ पे रॉय तो फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं पूरे आपको कि दैट इज नॉट बीइंग एबल टू गेट अ गुड रन। तो एंड दे आर ऑलवेज गोइंग अक्रॉस द लाइन काइंड ऑफ स्टफ विद हिम एंड राशि आल्सो इन द लास्ट गेम। और बॉल Hmm. भी लो रह रहा है, कल क्लासन भी जब रशीद की बॉल पे आउट हुए थे तो वो बॉल भी थोड़ा लो रहा था। So you have to try and take guys who are more sometimes accumulators as opposed to guys who are always going to give you big shots. But उसमें balance होना चाहिए। अब जैसे there is an example of good example of Brevis. Brevis भी बड़े बड़े across the line खेलते हैं shots, but is looked in much better touch in whatever little time as opposed to the guys we are talking about. तो दैट इज द Hmm. लॉजिक एंड परसेंटेजेस पे खेल रहे हैं कि परसेंटेज वाइज ये बेटर होगा एज अपेयर टू अदर्स। पर अगर आपको लगता है कि नहीं रॉय का अच्छा गेम आएगा या मॉर्गन का अच्छा गेम आएगा, तो राशि इज ऑल्सो क्लास गाय, इट्स नॉट दैट ही कांट प्ले स्पिन, बट वो जो प्रेशर है जो डेवलप हो रहा है और किस क्या एंट्री पॉइंट पे आ रहा है, ऑल ऑफ दैट इज कमिंग इनटू द पिक्चर फॉर समबडी लाइक हिम। तो
उसके हिसाब से you can always take a call in that sense. Yes, absolutely. And we're just waiting for the toss to happen because the toss will give us indications on who are the guys we should take or leave accordingly. Till then, if you haven't hit the like button, ensure that you hit it right now so that more people tune in by the time the toss is done, and then we can review the final team too, like we did yesterday. Yeah. And good to go with all three keepers. Very risky thing to do today because it's Yeah. both teams have some very good bowling and very good spin options too. So Yeah. very risky unless you feel like a flat batting track is coming. बिल्कुल तो Fortune, Steve. यस Go ahead, sir. Go ahead. नहीं देखो जो कीपर है सब ऐसा अग्रेसिव गेम खेल रहे हैं कि जब व्हेन इट कम्स ऑफ इट विल लुक लाइक अ मास्टर स्ट्रोक और वो कितना रेगुलरली होगा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 2025 भी मिल जाएगा तो आप उन्हें भी लो फिर देन यू हैव टू ड्रॉप सम ऑफ द सेफ पिक देयर जैसे अगर आप सोच रहे हो कि रिकल्टन शुरू में अच्छा करेंगे और फॉर्चून शुरू में डालते हैं तो दैट इज द कॉल दैट यू हैव टू टेक के सेफ टीम में सबके फॉर्चून होंगे बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड इन द लास्ट गेम तो अगर आपको Hmm. लगता है कि रिकल्टन अच्छा करेंगे तो आप रिकल्टन को लो फॉर्चून को मत लो सो दैट इज द काइंड ऑफ गेम दैट यू हैव टू प्ले कि आपको क्या लगता है कैसा होगा एंड देन यू कैन टेक पिक अ गाय क्योंकि इन दिस टूर्नामेंट अब तक अपार्ट फ्रॉम 2-3 प्लेयर्स कोई प्लेयर ऐसा सेफ नहीं है कि भाई ये Hmm. अच्छा करेगा ही क्योंकि यूसेज सबका वैसा रहा है तो जो विकेट फॉर्चून ने लिए वो शामसी को भी ले सकते थे शामसी सेकेंड इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं बट दे प्लेड शामसी आउट एंड टुक द रिस्क वर्सेस फॉर्चून जो हमने कल बात करी थी विद आदिल रशीद एंड मुतस्वामी वी आई स्पोक इन दैट एग्जैक्ट लाइन कि जो रोल काम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ राशिद करेगा बॉल दूर लेके जाएगा और वही काम मुतस्वामी ने किया नहीं टुक विकेट्स तो it can happen with the same kind of bowler also. So you have to back what you feel कि भाई मेरे हिसाब से ये होगा and then you can go with that feeling. Yes, pretty much possible. And Paarl are bowling first, and just waiting to hear the changes. It's a clash again of the first game. That's an interesting little setup between you two guys. Yeah, good to be बिल्कुल back सर in our hometown again, Steve, and looking forward to today. What about the team? We're going with Mitchell from Buren, Dane Vilas, and who else is coming in? Miller's forgotten the Two changes. changes, yeah. just like Rohit forgot what he wanted to do at the time of the toss. It's okay, happens. Time Rash, ऐसा चल रहा है. won the toss. What were you going to do? To be honest, we would like to bat first as well. Rashid says he wanted to bat first. So at every toss that we're seeing this tournament, the other captain is saying कि मुझे तो यही करना था. हाँ. तो अगेन जैसे हमने कहा डे गेम में शायद दोनों इनिंग्स में कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए तो आपको गेम में ज़्यादा कंडीशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो होपफुली अ गुड 150 काइंड ऑफ गेम ताकि both team के bowlers are in the Two games. What have you been talking about behind the scenes to stop that slide, to halt that slide? And he thinks it'll be hard to We just chase. need to take positive from all those Interesting. games, Waiting to see if he's bringing in another spinner. Something we had in the meeting. Just make sure we enjoy ourselves in the game inside, and I think. As I said, forget what happened. We want to take the positive from that, and we know how good team we are. But it's just about making sure we do the basics right and make sure we do the right things, and we need to make sure we enjoy this game. And that's all about we had the discussion, and things will happen as long as we give 100%. We make sure Sydney Thunder and we were like local. One game to another game, 50 all out. Yes, very true. बिल्कुल सर आई थिंक दैट इज द just the unfortunate standard of the game right now. आप देखें almost every team is having such kind of days. So can hardly disagree with that. Yeah, we go with the same team. Yeah. Same team. Okay. Same team for MI. News in the middle is the Royals have won the toss and they have So they are playing Linda against so many left-handers as their second spinner. Interesting. बिल्कुल तो लिंडे को आप ऐसे भी ले सकते हो यू कैन सी हिम एज अ पोटेंशियल बैटिंग ऑप्शन जो उसने अब तक करा है अच्छे से तो दैट इज आई थिंक अ गुड वैल्यू फॉर हिम टू ऐड तो आई So थिंक द let's just चेंजेस look at the वोंट base team. Yeah. या I think a few changes for the Royals. We're just waiting to see what the changes are for them. हाँ बिल्कुल क्योंकि जो हमने ऑलरेडी अगर चेंज हार्ड होने वाला है तो भी हमने पहले बॉलिंग के लिए शमजी और लुंगी को लिया है तो अगर यहाँ पे आपको लगता है कि शमशी फर्स्ट इनिंग्स में इफेक्टिव नहीं रहेंगे so there is that one spot for you to directly change it to an Evan Jones or somebody else. So Fair, yeah.
वो एक ऑप्शन है आपके पास ट्राई करने का, क्योंकि एवन जोन्स एंड में बॉलिंग करने आते हैं तो जंग विकेट उन्हें मिले हैं अब तक, फिर से मिलेंगे कि Hmm. नहीं ये तो नहीं पता हमने को, पर आई थिंक फॉर्चून कैन ऑल्सो स्टिल बी अ गुड ऑप्शन टू ट्राई, क्योंकि देर इज रुलफसन ब्रेविस, Rasif Anderson for him to attack. So I think in that sense that is also a handy option for you to try out. कि भाई you can drop one of the all-rounders. Audience में अगर आपको लगता है कि रन नहीं बनेंगे, Sam Curran I think becomes a handy option. But again he is batting up top. So Hmm. be very careful of your investment. और इसके लिए हम ज़्यादातर कहते हैं कि invest in mini GLs only, because you can make multiple combinations. दो टीम बनाओ, एक में Sam को रखो, एक में मत रखो. So that आपका सारे scenario are almost covered. Yes, absolutely. And sorry for the slight delay. We are just waiting for the second team's lineups to come out for Paarl. And as soon Yeah, as we know the lineups for them, we'll discuss the final team also. बिल्कुल. तब तक if you want, we can just have the base team on the screen so that people can have a Yes. look कि कहाँ पे आप changes कर सकते हो if you want to do that. So this is the base team, and now we'll have to also decide on Archer because he's bowling second, so there's no death overs Yeah. there. But still, the value will be high. Ngidi is bowling first, sir. What do you think about Ngidi as vice captain now that he's bowling first? Yeah, I think NGT Butler. So again, मैं this is how I usually go. अगर मुझे लग रहा है कि the Royals will win, तो मेरा combination रहेगा NGT and Butler. Simple straight up option. NGT with the wickets, Butler with a good knock in the chase. तो वो एक सीधा सीधा ऑप्शन है. Visualization 2, MI will get a good score and then they will defend. So whoever I feel will score will be the captain. I You can take a risk on Linde, Sam Curran, and your vice captain can be Rashid Khan. तो दैट वे आपके पास चार अच्छे ऑप्शन है. विच कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि ज़्यादा चलेगा, जो टीम पहले जीतेगी उसके हिसाब से यू कैन चेंज योर कॉम्बिनेशन. Yes, absolutely. We are just waiting for the Royals lineup to be out, and then we'll discuss the final team. Odean Smith C. Yes, the way he's bowling and batting, very possible. But now that he's bowling second, very difficult to anticipate what phase he'll bowl at because he's Odean is used in that way that when another bowler is having a bad day is when you generally use your sixth bowler. So, and in this Yeah, case, I guess it will be Linda who will face the trade-off because of the left-handers. बिल्कुल. तो ये गेम आपको एक किसी ऑलराउंडर पे रिस्क डेफिनेटली लेनी ही पड़ेगी. यू कैन इवन टेक द रिस्क ऑन, अगेन वी आर वेटिंग फॉर द रॉयल्स 11 सो दैट at least if you get to know the option that they are likely to use towards the back end, तो उसको अगर आपको लेना है या do you want to stick to something like a fortune or something, so that is something that you can take a simple call on. Yes, absolutely. Till then, you tell us in the comments now that the Royals are bowling first. What do you think? Who is going to be the highest wicket taker at least for the Royals? Because Ngidi looks like good choice now. हाँ बिल्कुल. और अगर यूज डेक है जैसे पढ़ने में आ रहा है तो ऑलवेज ए हैंडी ऑप्शन. तो चार एटलीस्ट वी गॉट द फोर ऑप्शंस दैट वी वांटेड. In terms Hmm. of common options, those will remain as Sam, Rashid, Lungi, and Butler. So again, Sam again I think it's more a tricky option as compared to the other three. But बाकी टीम तो Hmm. I think are very थ्री भी नहीं. अगर आप देखो तो लुंगी और बटलर ही एक ऐसे ऑप्शन है जो आप 100% श्योर होकर बोल सकते हो कि हाँ कि दे शुड डू वेल. तो सैम, राशिद, एवन जोन्स अगर डेफिनेटली आई थिंक खेल रहे हैं, सो ही बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू ट्राई आउट एज योर वाइस कैप्टन अगर आप बटलर के कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो तो. Yes, and no lineups yet. We are still waiting. बिल्कुल. तो आई थिंक एक चीज जो हम डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं कि सी यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन आर्चर, यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन ओडियन स्मिथ एंड जॉर्ज लिंडे. So these are the three guys. Archer should bowl more. Many changes in PR. Yes, sir. We're all waiting for the same. No Morgan versus Rashid. I'm reading. Why? So no Morgan then. क्योंकि राशिद तो टॉस पे Hmm. था राइट. Yeah. तो या तो अगर मॉर्गन नहीं खेल रहा है तो उनके बदले कौन खेल रहे हैं वो आपके टीम में आ सकते हैं अगर आपको लगता है वो चलेंगे तो.
MCTC, MIT City is unchanged. प्रॉब्ली कॉमन टीम देन अगर आपको रबाडा आर्चर दोनों पेसर चाहिए राशिद भी चाहिए तो मे बी यू कैन ड्रॉप वन ऑफ लिंडे ओडन स्मिथ पुट इन इवन जोन्स देयर एंड दैट इज स्टिल अ डिसेंट Morgan is not playing. Mitchell Van Buren is playing. Ferisco Adams is in, and Dane Villas is in. So they are playing five bowling options: Evan, Ferisco, Fortune, Ngidi, Shamsi, and sixth option is Vihan. So ओके both teams have six bowling options, and Vihan against one left-hander, two left-handers, Rickelton and Linda. PR बिल्कुल तो आई bowling थिंक first. या तो आई प्रॉब्ली टेक अ रिस्क ऑन ओडियन बाकी देखो जिसको जैसा जाना है Yes, so then let's try to make our final team. So as far as the Royals are concerned, we are going to stick with Ngiri, Shamsi, and 14. And with the Cape Town team, we are going with Rabada, Archer, and Rashid Khan. So these are our six bowlers in the team. Two all-rounders, we are going with George Linda and Sam Curran. And in the batting, we are going with Devil Bruce and David Miller. And our wicketkeeper is Josh Butler. So this मतलब is what our team looks like. Captain, sir, tell us the captain. I'm going with Rashid. You tell us your captain. Yeah, I'll probably still stick with Butler and Lungi as a combination and Sam and Rashid as the second. तो यहाँ पे जैसे हमने कहा, you could Hmm. easily swap Samshi with Evan Jones. So these are the rotations that you can try. और ऐसा कोई Hmm. ज़रूरी नहीं है कि आप यही टीम से खेलो. Please play with your own team. तो शमशी के बदले इवान जोन्स डायरेक्ट वाइस कैप्टन ऑप्शन फॉर ग्रैंड लीग फॉर यू टू ट्राई सेम इज द केस विद फॉर्चून अगर आपको लगता है कि नहीं शमशी विकेट लेंगे फॉर्चून नहीं लेगा तो यू कैन ड्रॉप फॉर्चून फॉर इवान जोन्स एंड अगर ब्यूरेन जो हर्ष भाई बहुत एक्साइटेड है उनके लिए तो इनको भी ऑफकोर्स यू कैन टेक इन योर साइट्स pertaining to the player matchup that you feel will work out and take him accordingly क्योंकि I I think इवन जोन्स एंड लुंगी शुड बोल टुवर्ड्स द एंड तो वो दो तो Hmm. मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे तो द कॉल विल बी फॉर मी इन द स्पिनर तो थोड़ा और सोच समझ के आई टेक दैट वन फाइनल कॉल एंड द रेस्ट इज व्हाट एज डिस्कस्ड सैम एंड राशिद इन टीम टू मे बी Yes, so that is the setup of our team for this game. You can also go make your teams right away on the Fan to Play app. Link is in the description. And have a good game and all the good luck to all of you. And join us on Telegram. The riskier team is coming there in some time. या बिल्कुल आई थिंक थर्ड बैटर आज भी हमने डिस्कस कर दिया है पहले तो यू कैन Yes. जस्ट प्रॉब्ली स्क्रॉल बैक एंड ऑफ कोर्स जो नए प्लेयर्स हैं यू कैन ट्राई देम देयर इज वैन पीरियड फॉर यू टू ट्राई Yes, absolutely. So go for it. All the good luck to all of you and see you all soon for another preview. यस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग